right? Same marks for right operation, right? Same marks right operation. OF stream is available, right? OF stream class, and first you create the object, right? First you create the object, then after create the object, then you know first to open the file, right? Open this file. After open, here you write, right? In previously, here you read and here you write, right? So write instruction here, right? After write, after write, then you know if one file is open, then finally you close this file, right? Then again you close this file, right? Again you close this file. So here only two things is different. One is the IF stream, and another is the OF stream, right? One is the IF stream, another is the OF stream. Then here is object, also here is object. Then here is you open the file, also here you open the file. After this one, here is you do read operation, and here you do write operation. And after there is sum close operation. Right? So only there is two things separate. One is the IF stream, here is the OF stream, another is your read operation, and another here is the write operation. Right? Now clear or any doubts? And the header file is Fstream, has into Fstream, and .h is not required for your C++. You know, in C you provide .h, but in C++ not required to provide .h. Right? Any doubt? Please confirm in your group chat or clear. Everyone? Please confirm. Please confirm. Now my voice and video will clear for you. Please confirm or any problem. Okay. Okay. No separate. ये गलत वॉइस सर हाँ देखो ना प्रोग्राम में तो
Right. So I think that architecture is clear to infra. All of you, right? What will architecture then? Clear to the So please concentrate. You know what the steps are record. Again, I will write. Not record to worry. Easy, easy. Nothing, nothing. Kitchen. Okay. Please focus. LID.text. I am going to my manual. How to read a file in C++. Very easy. And how to write in a file in C++. Very easy. First step, one step is record, create the object of iStream class, object name, maybe anything. Create the object of iStream class, then call open method को call कीजिए. After calling the open method, third step, call read method. After calling the read method, call close method. Right? And don't forget to include fstring. Include fstring. I just written in text. This is not a program. That's why proper syntax is not given here. So first include fstring header file. Second, create the object of ifstream class. ifstream class. Input file stream class. Then call open method, read method, and close method. Right? If I will copy these 5 steps, and I want to perform now, right? So what the changes are required? You know, we have to create the object of not ifstream. We have to create the object of ofstream class. Then call open method. Then call not write. Write करना है. So read को नहीं call करना है. Write को call करना है. Then call close method. So I think maximum steps are same. अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ifstream है और यहाँ पे ofstream है. यहाँ पे read है और यहाँ पे write. इतना ही डिफरेंस है और बाकी बिल्कुल सर. तो अगर आप इतना स्टेप फॉलो करेंगे तो आप कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं. राइट? So let's go for a program. How to read a file in C++ using this step. How many steps? 1, 2, 3, 4, and 5. So just looking to that step, I will implement my program. Later, I have a file. मान लीजिए मेरा पास एक फाइल है जिसका नाम है abc.text. In this abc.text, some contents are written. Hello sir, I am Rajnikant. I want to read this file. मुझे abc.text को read करना है. And you know the steps required to read a file. Just follow the steps. I am going to a program. And also, you know, the basics, the things required to include. First include iostream. That's the basics. All the times you are working with that. Using namespace string. And I have a main function. So I think up to it, the first step is completed. Include fstream. Yes, fstream is included.
Second step, create the object of ifstream class. Right. ifstream class object is created. Object name maybe X, maybe Y, maybe Z, maybe FN, maybe A, maybe B और maybe OBJ. Object name कुछ भी हो सकता है. Yes. First rule is completed. Second rule is completed. Go for the third rule. Call open method. Open is not a function. Open is a method. मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल करें. कौन सा फाइल को ओपन करना है? जो फाइल को रीड करना चाहते हैं वही फाइल को ओपन कर लेते हैं. abc.txt को ओपन करना है क्योंकि वो फाइल को रीड करना है. आई थिंक थर्ड स्टेप इज ऑल्सो कंप्लीटेड. फर्स्ट स्टेप include fstream. Second step, create the object of ifstream. Third, call open method. If we'll go for the fourth step, call read method. Right. Object के थ्रू से रीड करना है. रीडिंग ए मेथड. मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए. Read method takes two parameters. Read method takes two parameters. How many bytes you want to read? कितना bytes को read करना है? And where to store? Read method takes two parameters. How many bytes to read? और read करके कहाँ पे store होगा? I am giving the instruction. I want to read 100 bytes. 100 bytes को read करना है. मतलब 100 कैरेक्टर्स को रीड करना है और रीड करके एक array के अंदर स्टोर कर लीजिए. So let that array is data, but that array is not created. So data is an array which is capable to store 100 number of elements. Once readed, the last step we have to call close method. Yes, object dot close. बट रीड होके सही से आया है कि नहीं आया है जानने के लिए हम डाटा को प्रिंट करके चेक करते हैं. तो रीड ऑपरेशन करने के लिए डाटा चाहिए था. डाटा को क्रिएट किए हैं, array को क्रिएट किए हैं. 100 एलिमेंट्स को रीड कीजिए और डाटा के अंदर असाइन कर लीजिए और डाटा को प्रिंट करके दिखाइए कि डाटा सही से आया है कि नहीं आया है. काम खत्म होने के बाद क्लोज कर लेंगे. सो वेरी इजी. फर्स्ट स्टेप, इंक्लूड fstream. सेकेंड स्टेप, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ifstream. रीड करना है तो ifstream का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए. देन कॉल टू ओपन मेथड, देन कॉल टू रीड मेथड, देन कॉल टू क्लोज मेथड. रीड मेथड को कॉल करने के टाइम में एक array चाहिए था जहां पे हम स्टोर करेंगे, इसलिए हम array को क्रिएट किया है. और रीड करने के बाद डेटा आया है कि नहीं आया है जानने के लिए हम डेटा को प्रिंट किए. I think that's easy. So now if I will compare main.c++, is there any error? It's giving semicolon. Where the semicolon? Sorry, I think after this end L के जगह semicolon चाहिए था. Again, if I will compile the program, there is no any error and run. You can identify. I am getting the content. Hello sir, I am Rajnikant. This is the output of my program, and this output why I am getting because I read which file abc.txt. Right? तो जिस तरीके से स्टेप स्पेसिफाई किया गया था, include fstream, create object of ifstream, call open method, call read method, then call close method. Yes, include fstream, create the object of ifstream. Object name कुछ भी हो सकता है. Then call open method, then read method, then close method. Read करने के टाइम में डेटा चाहिए था जहां पे स्टोर करना था वैल्यू. So that's the number of characters for that one array is taken. And डेटा सही से रीड हुआ है कि नहीं हुआ है जानने के लिए डेटा को प्रिंट करना जरूरी था, इसलिए हम डेटा को प्रिंट किए.
So these three lines, this is not different step. These three lines required to call read method. Read method के लिए डाटा चाहिए था. Read सही से हुआ है कि नहीं हुआ है जानने के लिए हम डेटा को प्रिंट किए हैं. So read method is the important here. Open method, read method, and close method. Is that clear to all of you? Is this program is clear to all of you? Please confirm through your group chat. Right. So that's very easy. That's very easy. Which file handling is easy? C file handling is easy or C++ file handling is easy? You know file handling in C, file pointer mechanism. Huh? Which file handling is easy? Yes, C++. Only three lines. Open, read, and close. Before that, you have to create the object. Yes. And to create the object, you have to work with class. And for that class, you have to include the header file. This much easy. This much easy. As a later, next time, I want to perform write operation. मान लीजिए मेरा पास एक डेटा है और लिखा गया है हेलो आया C++. Hello, I am C++. I want to write this data inside that file. So what the changes are required? Please concentrate. What the changes are required? First step, include fstream. हाँ बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड वाला स्टेप में थोड़ा डिफरेंट है. क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? OFStream क्लास. आउटपुट करना है, राइट करना है, आउटपुट ऑपरेशन करना है. आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए OFStream चाहिए. थर्ड, कॉल ओपन मेथड बिल्कुल है. जो फाइल के अंदर राइट करना है वो फाइल को ओपन करके रखे हैं. देन डोंट कॉल रीड मेथड, रीड को नहीं कॉल करना है. सेकंड, ओपन कॉल हो चुका है, उसके बाद किसको कॉल करना है? तो राइट को कॉल करना है. तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट राइट को कॉल कीजिए. क्या राइट करना है? डेटा को राइट करना है. और इसका लेंथ कितना है? strlen ऑफ डेट, मतलब कितना बाइट राइट करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम strlen फंक्शन का यूज किए हैं. एंड राइट करने के बाद क्लोज कर लीजिए. राइट करने के बाद क्लोज कर लीजिए. सो आई थिंक राइट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड. इफ आई विल कंपाइल C++ standard C++, no any error, and if I will run, you can identify no any output. यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला है. आउटपुट कहाँ पे गेट करेंगे? अगर फाइल को ओपन करेंगे तो वहां पे पहले से लिखा गया था हेलो आई एम रजनीकांत, बट नाउ द न्यू कंटेंट इज अवेलेबल हेलो आई एम C++. हेलो आई एम C++. सो आई थिंक इससे तो इजी और कुछ नहीं. This is the program. This is the program to perform write operation. First step, include fstream. Second step, create the object of OFStream. Third step, call open method. Fourth step, call write method. Fifth step, call close method. This much easy. This much easy. In C++, file handling mechanism. Any doubts in this program? Any doubts in this program? Please confirm. If any doubt, please confirm through your group chat. If no doubts, also please confirm. Yes. How to write down? How to read it? अच्छा, next time. I am taking
गेटेस्ट फंक्शन, क्योंकि आप जानते हैं स्कैनएफ में जो होता है वो स्पेस को इंक्लूड नहीं करता है, सीन भी स्पेस को इंक्लूड नहीं करता है, बट गेटेस्ट फंक्शन it include space also. So please concentrate. Now what the data is required to write in file I given in runtime. If I will compile, it's giving some error, cannot convert. In line number 14, there is an error. Yes, I think in line number 14, this one, I think this is not equal to pass the address, only data. That's the getest function, I think you know from C. Babu, getest function explain. If I will compile, that's a warning, that's not an error. But if I will run the program, providing, so I am LIT. If I will open that file, yes, the data is available. Hi sir, I am LIT. Again, if I will run providing, hello sir, I am India. If I will go for that file, yes, hello sir, I am India is available. But I think you identify problem क्या हो रहा है, जब भी हम write कर रहे हैं, previous data loss हो रहा है, previous data loss हो रहा है. तो अगर आप previous data को loss नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा ऑपरेशन करना होता है? अपेंड ऑपरेशन करना होता है. अपेंड ऑपरेशन करने के लिए, प्लीज रिमेंबर, अपेंड ऑपरेशंस करने के लिए we have to use this syntax. We have to use this syntax if you want to perform append operation. Append operation में क्या होता है? Previous data loss नहीं होता है, previous data के साथ new data भी available होता है. If I will compile the program and if I will run providing, hi sir, I am LIT, and if I will check the content, you can identify the previous data was not deleted. India is also available, LIT is also available, right? So this is the difference between the write mode and append mode. In write mode, the previous data will be deleted, only new data will be available. But in append mode, your new data will be available with the previous data. And if you want to access the append mode, if you want to access your append mode, for that, please remember this syntax. When you are opening the file, you have to specify IOS ; scope resolution operator APP. APP stands for append, right? So today we studied how to work with the string type of data. How to write a string, how to read a string, how to append a string, In the next class, we will study how to write an object, how to read an object. आप टी में स्टडी करके आए हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को राइट किया जाता है, एक स्ट्रक्चर को किस तरीके से रीड किया जाता है. उसी हिसाब से कल हम स्टडी करेंगे एक फाइल के अंदर किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे और वही ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रीड करेंगे. Right? So I think this program is clear to all of you. Is this clear? Why first data replaced by other data in file? Yes, because आप जो सत्यम जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वहां पे जो मोड था वो राइट मोड था. अगर आप फर्स्ट डेटा को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको कौन सा मोड में काम करना होगा? अपेंड मोड में काम करना होगा. आई थिंक दैट इज क्लियर. सत्यम, इज इट क्लियर टू यू? इसमें कनेक्शन is okay. Yes. Other student, please confirm. Is all the thing is clear or any doubts you had? Yes. Easy. In C that was something complicated, but in C++ easy. Right. Okay, for today this much. In the next class we will study how to write object and how to read object. I think next day. Okay. Next class we will go for how to write object in a file and how to read object in a file. Thank you for today this much. In the next class we will continue.
Thank you all. Have a great day. Thank you.